Am I nominated? Oh, okay. I didn't know. But I've come here for GQ because it's a magazine I read, and Shay's a good friend, and I'm here for him. And it's one of those rare nights when I'm actually out, so it feels good being out here. जॉन आपके लिए स्टाइल आइकॉन कौन है और आपने किस तरह से स्टाइल आपने जी मेरे लिए स्टाइल आइकॉन काफ़ी स्टाइल आइकॉन्स है, लेकिन अगर हॉलीवुड की बात करूँ, इंटरनेशनल की बात करूँ, तो शायद एक ही नाम मेरे जहन में आता है, वो है जॉर्ज क्लूनी। वो मेरे लिए एक कंप्लीट मैन है। वो बहुत ही जो अपनी एज है वो दिखाता है, और इज़ वेरी वेरी सेक्सी। बॉलीवुड के बारे में आप बॉलीवुड के अरे आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में भी काफ़ी एक्टर्स बहुत ही स्टाइलिश है, और शायद आज काफ़ी एक्टर्स यहाँ पे आएंगे जो काफ़ी स्टाइलिश है। मैंने सुना कि प्रतीक बब्बर आ रहा है। आई थिंक ही इज़ एक्सट्रीमली स्टाइलिश एंड वेरी गुड लुकिंग। और अर्जुन कपूर आ रहे हैं, नॉट अ वेरी हैंडसम गाय। तो हमारी जो यंग लॉट है, मेरा जो को स्टार है वरुण, बहुत ही स्टाइलिश है, और आई थिंक द एंटायर यंग लॉट इज रियली वेरी स्टाइलिश। आपको क्या लगता है इस साल कौन विन होना चाहिए 2016 में? जी वो शायद GQ वाले को पता होगा। सो आई रियली डोंट नो। आई जस्ट कम हियर बिकॉज जैसे मैंने कहा कि GQ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं GQ पढ़ता हूँ, और इनके जो एडिटर है मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो इनके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। थैंक यू। सॉरी हाँ जी डिशुम के ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वील वेट फॉर द फिल्म एंड वॉच द फिल्म, उसके बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ पे एक्साइट होना ज़रूरी नहीं है। और ट्रेलर्स का फैंटास्टिक रिस्पांस बट जी कॉम्प्लीमेंट पता नहीं, रिसेंटली किसी ने कहा कि यू हैव एन एज्ड वन बिट फ्रॉम दोस्ताना टू डिशुम। आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई रिसीव। किसी ने कहा कि शूटिंग के बाद डू यू गो एंड पुट योरसेल्फ इन आइस एंड फ्रीज योरसेल्फ, सो आई फेल्ट गुड अबाउट इट। थैंक यू। So I'm wearing Gaurav Gupta tonight, and I think it's different for me, but it looks fantastic because I love black. Black's fantastic. See you, bye-bye. अरे गुड लुकिंग चाहिए था ना आप लोगों को। दिस इज अ गुड लुकिंग मैन। थैंक यू सो मच।
स्टाइल इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. It's an extension of your personality. आपकी जो सोच है, आपकी जो टेस्ट है, आपकी जो पसंद है, it should reflect in your style. That's why it's so personal. What looks good on one person may not look good on someone else. आपका क्या स्टाइल? मेरा बहुत ही क्लासिक स्टाइल है. मेरा ये मानना है, if it looked good 50 years ago and if it looks good today, it should look good 50 years from now also. I'm not very experimental. अच्छा, आप बॉलीवुड में आप किसे पसंद करते हैं जो काफ़ी स्टाइलिश आपको लगता है? Personally, in my opinion, the best dressed guy is Saif Ali Khan. The way that man knows how to wear a suit. अच्छा, सुल्तान का ट्रेलर देखा आपने? कैसी लगी? Sorry? सुल्तान सलमान की जो फिल्म आ रही है। हाँ, करेक्ट. देखिए, मेरी ओपिनियन ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, थोड़ी बायस्ड होगी. सलमान भाई मेरे ख़ानदान के बहुत करीब है, इज़ अ वेरी डियर फैमिली फ्रेंड. उसके अलावा सुल्तान के जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफ़र इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. सो आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी बायस्ड ओपिनियन. मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी. क्या कहूँ, इमरान, आपकी अपकमिंग मूवीज़ के बारे में क्या जानते हैं? इस वक्त कुछ नहीं. थैंक यू. Hi guys. आपके लिए स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? आप बेस्ट ड्रेस किसे कहते हैं? Style statement. My style statement. I like to go a little bold. I like to take a risk. I think there needs to be one thing in your outfit that really pops. बॉलीवुड में कैसे पसंद करती है? Who do I like? I remember last year when Veer Singh here. I was standing right here, and he walked in with this insane outfit on and a boombox. And it was the first time ever that I'm like, you know what? I'm gonna let you take the red carpet. So I like risk takers like that. Okay, any upcoming movies? What I wanted to announce tonight, I haven't told anybody yet, but on Wednesday, June 8th, is actually my birthday, and I'm starting a charity called Leap for Hunger. So I'm teaching for the very first time in India, I'm teaching a free dance class. 400 people, the first 400 people that sign up can come, and we're going to package together these lunches, hopefully 500 to 1,000 lunches, and after the dance class, we'll go all over Mumbai and distribute them to underprivileged people. So that's kind of what I've been working on for the last 3 weeks, is getting together this charity. Projects other than that, movies and stuff, I'll announce soon. Thanks guys.
I'm wearing Anasha Thakur and trumpet shoes, yes. If I got those names right, yes. Who do you think is your style icon? My style icon, I mean, there's a bunch of them. I think there's a lot of people who dress up really cool. I think Akshay Kumar is really cool. He's always easy, he's always casual, he's always himself, he's always sporty, he's really cool. So yeah, I think Akshay Kumar would be a good style icon to have. One word, how would you define your style? Style, I think, needs to be an extension of your own personality. I mean, it's got to be you. You've got to have fun with it. You've got to enjoy it yourself. You know, it can't be something that somebody else put on you and you're like, yeah, okay, fine, this looks nice. I think style is something that you enjoy, and more importantly, I think style is something that's within. You know, it's not without. So that's what matters. रणवीर सिंह ने लास्ट हाँ जी। में ऐसे ही अंदाज में हाँ जी। तो क्या आप उनको follow करते हैं? हाँ, क्या रणवीर सिंह लास्ट टाइम तो मुझे याद है कि नाइट सूट में नजर आए थे with this really big hat. He's a super cool guy. You know, I've always seen him like in the wildest things, and I think there's something really interesting to his own persona that he tries to bring out. So he's one of the coolest guys out there, and his style sense is, I think, quirky also falls short of a word. हाँ जी. इस साल अगर किसी को वोट करना होता, I think Ranveer would be a good candidate again. Did he win last year? And I'm sure he won last year, right? So yes, I think Ranveer would slay it again 2 times in a row. Thank you very much. Thank you.